Yeah, so students, I was telling you about the definition of computer, and in the definition of computer, I was telling you that what is a program. So, program is a set of instructions that you give to the computer. Now, these are some of the characteristics of computers. That is the next topic we are going to cover in this unit. See, as you can see that there are limited topics. Like first topic was the history of computing. Now second is what is a computer that I've told you. Characteristics of computers and advantages, disadvantages of computers. Then your computer organization, that is how computer is organized. Okay, these are the only topics in Unit 1. So obviously your paper will come from these topics only. Okay, so everything, each and every part that I'm going to teach you is very, very important because topics are very very limited, so you have to understand and understand all the points very very carefully while writing them in your exams. Now, characteristics of computer. What are the characteristics of computer? First is obviously the speed. Why? As I told you in the beginning only, that in 1801 there was a need for the development of computers, because at that time the US government did not have anything to tabulate the data. The US population was growing so rapidly. The tabulation took around 7 years. Okay, so therefore the human task can be performed very very whatever you type in computer, whatever you do in computer, it can be processed and performed in a very speedily manner. Now computers basically they can do 100 million calculations per second, which obviously a human on paper and pen cannot do. Okay, so per second computers can do 100 millions of calculations. Accuracy, you all must have used Microsoft Excel. Okay, so in Microsoft Excel, like mathematics, you all know, we all know mathematics, but if suppose you have to perform large calculations on large number of data, so doing it on paper and pen is obviously not easy. So by Microsoft, in using Microsoft Excel, by just putting the formula, you will get the result of the complete data. There are so many formulas that are available, and your result will obviously be accurate. Okay, so it does everything with accuracy. Obviously human error can be there. अगर suppose as a person आपने average की जगह sum का formula लगा दिया, तो obviously you will get the wrong result. Okay, so the input depends upon the user. Users this तरह से input दे रहा है, तो output भी आपका उस तरीके से ही आएगा. The next point is diligence. What do you mean by diligence? The quality of doing work carefully and thoroughly. Okay, as human being we can get tired, but computers never get tired. आप उनको रात को कभी भी open करो, they will perform the task with that much accuracy only, जैसे वो अगर आप उनको morning के time पे open करो तब कर रहे हैं. ठीक है, so delicacy means what? Quality of doing work carefully and thoroughly. Okay, everything is done thoroughly. Whatever you do in computer, they do not lack concentration. Humans minds, जो humans हैं, they lack concentration. Sometimes we as human we get diverted towards some or the other thing, but computers don't get diverted. They perform everything with accuracy and with concentration. Okay, now next characteristic is versatility. Now what is the meaning of versatility? The capability to perform different kinds of work with same accuracy and efficiency. Okay, capability to perform different type of work with same accuracy and efficiency. जो भी आप कंप्यूटर पे वर्क करोगे, सो कंप्यूटर विल परफॉर्म एवरीथिंग. सपोज यू आर यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, आपने पहले सम का फॉर्मूला लगाया था, आप उसको 100 टाइम्स भी लगाओगे तब भी ऑल्सो यू विल गेट द सेम रिजल्ट ओनली. जो उसका रिजल्ट है वही आएगा. ये नहीं कि आप 100 टाइम यूज़ कर रहे हो तो एक्यूरेसी कम हो जाएगी या उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, एंड सो ऑन. सो दिस इज वर्सेटैलिटी. The next is your reliability. Whatever answer you get, whatever output you get, it will be a reliable answer. You can rely on that particular thing. Memory. Computer has memory, whether we talk about primary memory or secondary memory, to store the data. The details of memory we will study in unit number 3. That what are the types of memory. Adaptability. Whatever you install on computer,
सॉफ्टवेयर कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है, आप जिस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम लोगे या आप जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे, कंप्यूटर्स विल अडेप्ट अकॉर्डिंग टू इट एंड it will function according to it. So this is the adaptability. Right now I am discussing all these points very simple terms with you. We'll discuss all these points in details in our coming classes. Now, characteristics of computers, so you can also say that these are the advantages of computers. Okay. Now, what are the disadvantages of computers or the limitations of computers? Lack of common sense. As we all know that computers operate as per the user. जो user instructions देगा, उसके according computer will operate. So they do not have their own common sense. They use the common sense of the user who is operating the computer. Obviously, IQ level is also not there. There is zero IQ. Computers cannot take decisions on their own. They are dependent upon the human beings for taking the decisions. If suppose you as a human being has decided that you want to this work to be done using Windows operating system, so it's your decision. Okay, so you will install Windows on your computer, and if you want to work on Unix, so you will install Unix. So they do not have they cannot take decision on their own. Their decision is dependent upon the person who is handling the computer. The output, yeah, in simple terms, whatever computer क्या करेगा, computer will give you the output. So it depends upon the user input. Whatever user gives the input, the computer will give the output accordingly. Okay, cannot detect error in logic. Now, what do we mean by error in logic? जो भी आप सॉफ्टवेयर देखते हैं, जो भी आप प्रोग्राम्स देखते हैं, उसके लिए कोडिंग इज बीइंग डन. ओके, कोडिंग इज बीइंग डन. सो दोस कोडिंग जो बन रहा है, जो प्रोग्राम बना रहे हो, प्रोग्राम मैंने आपको क्या बताया था, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. सो डिपेंडिंग अपॉन विच एवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू आर यूजिंग, you use the code according to that is the set of instructions. जो आप कोड लिख रहे हो, that is your set of instructions. तो उसमें अगर कहीं एरर आ गया, सो वो लॉजिकल एरर यू कंप्यूटर कैन नॉट करेक्ट. दैट लॉजिकल एरर हैज़ टू बी corrected by the person only, the individual only who has developed logic or who is working on the logic. So computers cannot detect what is the logic in the error because of which that particular error is coming. Only expert user can work on it. Whoever is expert, कोई भी person है who has never used अभी मैं लैपटॉप की तो बात ही नहीं करती, who has never seen a mouse or a keyboard in his or her life, obviously he or she cannot work on the computer. So you need the basic understanding to run a computer. A layman can not run a computer. Okay, now these are some of the limitations of computers. So these are the basic four topics that we are going to do in Unit 1 in details. Okay, now next main topic that is that will obviously be asked in each and every of your exam and has been asked in each and every of your exam is basic computer organization. बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंप्यूटर किस चीज़ से बना है, हमें क्या दिखता है, हमें दिखता है इनपुट दिया, हमने कीबोर्ड से माउस से हमें आउटपुट स्क्रीन पे आउटपुट मिल गया, बट उसके अंदर प्रोसेसिंग किस तरीके से होती है कि यू गेट द आउटपुट. ओके, सो दैट इज़ योर बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन. सो कंप्यूटर बेसिकली consists of following units. First is your input unit. Input unit is the unit through which you will give the input. इनपुट यूनिट मैंने आपको क्या बताया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, दैट इज़ योर इनपुट यूनिट. ओके, देन इनपुट के बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू. सीपीयू दिखता है आपको कंप्यूटर में अपने. दैट सीपीयू कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. सीपीयू के टू पार्ट्स होते हैं. व्हाट आर दोज पार्ट्स? कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. Okay, CPU has two parts, control unit and arithmetic and logic unit. अभी के लिए you can just understand that arithmetic and logic unit basically it will work on all the calculations that you are performing. Suppose आपने sum किया या multiply किया या कोई और calculation work किया है,
या आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ फॉर्मूलेस पुट किए हैं, यू वांट द रिजल्ट. सो ऑल द कैलकुलेशन पार्ट, एज द नेम सजेस्ट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. All the calculation part is taken care of by the arithmetic logic unit. Okay, and the control unit, arithmetic and logic unit are both parts of CPU. The second part of CPU is control unit. Control unit, as the name suggests, it will control. What will it control? It will control the input devices. Input से जो आपको input मिल रहा है, ठीक है, एंड दी आउटपुट जो आपको आउटपुट मिल रहा है, उन दोनों को कंट्रोल कौन करेगा? बेसिकली सिंपल टर्म्स में यू कैन से दैट वट एवर इनपुट यू आर गिविंग, यू वांट द आउटपुट टू बी अकॉर्डिंग टू योर इनपुट. ठीक है, सपोज आपने अपना नाम टाइप किया है and you want the result to be printed on the screen, so obviously your name should only come on the screen, your surname should not come because you have typed your name. So उसको control कौन करता है? उसको control करता है your control unit. Okay, basic definitions I am telling you. इसकी जो proper definition है we will study कि what are these proper definitions. अब स्टोरेज यूनिट से क्या समझ आ रहा है आपको? स्टोरेज यूनिट मीन्स जहाँ पे आपका डेटा, जो आप जिस डेटा पे वर्क कर रहे हो वो स्टोर हो रहा है. ठीक है, सो द नेक्स्ट यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर इज द स्टोरेज यूनिट. ओके, एंड द लास्ट यूनिट ऑफ द कंप्यूटर, ये आउटपुट यूनिट मैंने बता ही दिया. आउटपुट यूनिट के बाद आपका रिजल्ट आएगा, यू विल गेट द रिजल्ट. सो द बेसिक यूनिट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर, फर्स्ट इज योर इनपुट यूनिट, second is your storage unit, then your central processing unit. Central processing units contains your arithmetic logic unit and control unit, and after that comes your output unit. ठीक है, arithmetic logic unit and storage unit are connected to each other. Why are they connected to each other? Why? क्योंकि जैसे सपोज मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एग्जांपल दिया, आपने फॉर्मूलेस पुट किए, ठीक है, यू वांट द रिजल्ट, सो वो रिजल्ट कहीं ना कहीं स्टोर तो होगा ना, सो देयरफॉर दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर. कंट्रोल यूनिट किसको कनेक्ट करेगा? इनपुट यूनिट को, आउटपुट यूनिट को, और अरिथमेटिक यूनिट से भी वो कनेक्शन बना के रखेगा. ओके, इट विल कंट्रोल ऑल ऑफ देम. एंड कंट्रोल यूनिट, ये तो इनपुट आउटपुट बताई दिया मैंने. Okay, so we will study the block diagram of basic computer organization and all the parts in details. इसमें मैं आपको बस एक overview दे देती हूँ. इसमें we will first study about the CPU, central processing unit के बारे में हम करेंगे डिटेल्स में कि what are the operations that are performed in CPU. Then we will study about the input devices, what are the different input devices. I gave you two names, keyboard and mouse. There are different types of input devices like scanner, joystick, etc., OCR, microphone, that all we are going to study. Output devices भी हम करेंगे इस यूनिट में. We will study them in, I'll just give you the definition of all these things in this unit, because ये आपका input output device का complete unit है. जो second unit है वो input output devices पे ही है. So इसमें हम definition करेंगे इनका. ठीक है, देन वी विल टॉक अबाउट द मेमोरी. मेमोरी भी आपका यूनिट 3 है, तो इसमें वी विल सी द बेसिक थिंग्स अबाउट मेमोरी, एंड देन इन यूनिट 3 वी विल स्टडी मेमोरी इन डिटेल्स. ऑलराइट, नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट इज द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग की स्लाइड में बताया कि 1801 से कंप्यूटर्स पे वर्क स्टार्ट हो गया था. अपनी फर्स्ट क्लास में वी विल स्टडी अबाउट दोज ईयर्स ओनली एंड ऑल द डेवलपमेंट्स दैट वर टेकन इन कंसेक्यूटिव ईयर्स. But based on those, the different generation of computers that have been developed are, in 1946, the first generation of computers was developed, that was known as vacuum tubes. Okay, what was it known? It was known as vacuum tubes. So जो first generation है, that is also known as machine level. Machine level is first generation को machine level भी कहते हैं. इसका क्या मतलब? उस टाइम पे देयर वाज ओनली लैंग्वेज ऑफ जीरोज एंड वंस. एवरीथिंग, बस प्रोग्रामिंग भी अगर होती तो इन टर्म्स ऑफ जीरोज एंड वंस ही होती. देयर वाज नो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नथिंग. सेकेंड जनरेशन आपका ये ईयर है, उसमें दैट जनरेशन इज नोन एज ट्रांजिस्टर्स. सो इसमें क्या था? सेकेंड जनरेशन इज नोन एज असेंबली लेवल लैंग्वेज ऑल्सो. ओके, उसमें असेंबली लैंग्वेज डेवलप हुई थी, असेंबली लेवल. देन थर्ड जनरेशन इज नोन एज इंटीग्रेटेड सर्किट्स. इसको हम बोलते हैं, इसमें प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज डेवलप हुई थी. देन फोर्थ जनरेशन में दिस नोन एज माइक्रो प्रोसेसर्स.
इसमें आपकी डेवलप हुई थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज,